Okay, let me share the screen. Okay, basically हमने किया था कल नॉर्मल कर्वेचर्स के बारे में और प्रिंसिपल नहीं नॉर्मल सेक्शंस और प्रिंसिपल कर्वेचर्स के बारे में शुरू किया था हमने. So let me erase this first. Okay, so what I said was that if you ये ठीक से नहीं पढ़ रहा है इस पे कुछ टेढ़ी मेढ़ा हो रहा है ये क्या हो रहा है. Okay, what I said was फिर से ये टेढ़ा हो रहा है पता नहीं क्यों कि अगर मेरे पास एक सरफेस हो या सरफेस का एक पैच हो तो अगर ये रेगुलर सरफेस है तो आई कैन डिफाइन नॉर्मल एट ईच पॉइंट. तो मान लो इस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल डिफाइन की या नॉर्मल है एक वेक्टर. So I take the plane which contains the normal at this point and it would intersect the surface in a curve. इसको हम कहते हैं normal section. And then at this point there can be infinitely many normal sections क्योंकि अगर मैं ऐसे लूँ दूसरा ऐसे एक plane in this direction वो भी if I rotate the initial plane about the surface normal, so it would also contain the surface normal, so you will get another normal section. So these are all curves at a point, right, that live inside this plane containing the normal, and they're plane curves. So then we called the curvature of this curve the normal curvature at this point in a particular direction. Once we fix the plane, because there are infinitely many planes, and we also showed that if we are looking for the maximum or minimum value of the curvatures of these normal sections, there would be two particular sections, which would be those normal sections having the largest and the smallest curvature. उनको हमने कहा principal sections और उनके curvatures को हमने कहा principal curvatures. और उसको हमने denote किया by k sub a and k sub b, and I want to remind you further that kn was basically k, what was it, n dot of double dash, which was equal to जो हमने किया था l du square plus twice m du dv plus n dv square for a particular direction. And in the denominator you had e du square plus twice f du dv plus g dv square, where L, E, F, G, and L, M, N are the first and second order fundamental magnitudes. Now this would be Kn, it would be normal curvature. Let me write it down. Or curvature of the normal section, जिसको हमने कहा normal curvature at point P. कौन सा point P? जहां पे हम E, F, G and L, M, N evaluate करेंगे. राइट, कोई पॉइंट होगा जहां पे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स और उनके डॉट प्रोडक्ट्स इवेलुएट करेंगे इन द डायरेक्शन. और एक डायरेक्शन भी होगी, एक चेंज ऑफ पैरामीटर्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब चेंज ऑफ पैरामीटर्स से डी यू डी वी है. तो एट पॉइंट पी जहां पे हमने इन फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स को इवेलुएट किया इन द डायरेक्शन डी यू डी वी नॉर्मल कर्वेचर इसके बराबर. फिर हमने देखा कि अगर हम इसका लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू जिनको हमने प्रिंसिपल कर्वेचर्स कहा कि एन के बी, दे मस्ट बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. क्या था वो, चलो मैं निकालता हूँ ये. यानी हमने दिखाया जहां कल पहुंचे थे कि वो इस इक्वेशन के रूट्स होने चाहिए. वो कौन सी इक्वेशन है? इट वाज h square kn square k sub n square minus en plus gl minus twice fm times kn
प्लस टी स्क्वायर। इसमें जो अगर हम इफ वी सॉल्व फॉर के एन, जो उसके दो वैल्यूज मिलेंगे, ऑफ कोर्स दो मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो एक के ए होगा, एक के बी होगा, एंड दे विल बी द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ के एन एट अ सर्टेन पॉइंट। तो उनको हम कहेंगे उस पॉइंट के लिए प्रिंसिपल कर्वेचर्स। Furthermore, of course, they would correspond to some direction, है ना? So वो किसी डायरेक्शन में होंगे जहाँ पर लीस्ट एंड हाईएस्ट कर्वेचर होगा। जैसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ सिंपल एग्जांपल स्फीयर की, स्फीयर में ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं ये प्रिंसिपल सेक्शन लूंगा, यानी नॉर्मल तो होगा इस डायरेक्शन में, और ये जो होगा दे वुड बी ग्रेट सर्कल्स, यानी बेसिकली वहां पे हर कोई सेक्शन प्रिंसिपल सेक्शन है क्योंकि सबका कर्वेचर सेम है। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं अम्बलिक। अम्बलिक का मतलब है जो सारे जो नॉर्मल सेक्शंस हैं एट अ सर्टेन पॉइंट, उनका कर्वेचर सेम है। सो द प्रिंसिपल सेक्शन, basically, all the sections are the same, all the normal sections are the same. Okay, but still, what I said was that there are certain principal directions, जिसको हमने lambda parameter से use किया था. Now, तो they satisfy a certain differential equation. वो कौन सी, मतलब let me write down differential equation of principal directions. Okay, now let me हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा इसमें. Yes, this one. और lambda को वापस सब्स्टिट्यूट करना होगा. Now principal directions, let me write down first. The principal directions corresponding to principal curvatures to principal directions sorry, make it clear, corresponding to principal curvatures, इनकी corresponding जो directions होगी are obtained from, जो हमने किया था एक, हमने इससे पहले वाले थ्योरम में एक इक्वेशन लिखी थी, वो 3 4, इसमें lambda का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था. Which equation is it? Oh yes, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? एक्चुअली लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या लिखा था? जस्ट मिनट. So you must have this equation. हाँ, ये L lambda, ये यहाँ से आया था, L lambda plus M divided by E lambda plus F is equal to M lambda plus N divided by F lambda plus G. ये हम पहले हमने when we put dkn by d lambda equal to 0, तो वहां से हमें ये इक्वेशन मिली थी. तो अगर हम इसको सॉल्व करें, दिस वुड गिव मी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सो यू विल गेट बेसिकली em minus fl टाइम्स lambda स्क्वायर, क्योंकि em और fl में lambda स्क्वायर आएगा, राइट, प्लस en minus gl times lambda plus fn
माइनस जी एम इज इक्वल टू 0। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई किया, कुछ खास नहीं। नाउ बट वी नो दैट वेयर lambda is equal to du by dv, so that we get this differential equation em minus fl into du by dv का square plus en minus gl into du by dv plus fn minus gl is equal to 0। मैंने क्या लिखा, यस लैम्डा था डी बाई डीवी। तो अगर हम डीवी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, यू विल गेट em minus fl times du square plus en minus gl du dv plus fn minus gm into dv square is equal to 0, right? So this is the differential equation, or the principal directions must satisfy this differential equation. Now du by dy to the ratio of the changes in u and v, उस डायरेक्शन की जो प्रिंसिपल डायरेक्शन होगी, we must satisfy this differential equation. अब इसमें एक चीज है जो कि rather straightforward है कि अगर ये प्रोपोर्शनल हुए, तो वो यहीं पे मैं लिखता हूँ, सपोज ये वेर मतलब सपोज दे वेर प्रोपोर्शनल, यानी अगर E by m बराबर हो F by L के, which F by नहीं MLN और G by N के, तो ये तीनों जीरो हो जाएंगे, यानी इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, बिकॉज then 0 would be equal to 0. So basically this is the situation हमने किया है, या तो सरफेस प्लेन है या वो स्फीयर होगा, और स्फीयर में यही है कि वहां पे प्रिंसिपल डायरेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं वहां पे, बिकॉज दिस इज ट्रू, बिकॉज ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही इंडिटर्मिनेट हो जाएगी। So therefore every direction is a principal direction in such a case। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं the point is an oblique। अब स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर में ये हर जगह होता है, प्लेन में हर जगह होता है, every point is an oblique, यानी सभी डायरेक्शंस और प्रिंसिपल डायरेक्शंस। लेकिन कभी कभी होता है कि कोई एक पॉइंट अम्बिलिक हो, या कोई एक सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सरफेस अम्बिलिक हो। जैसे एक एग्जांपल हो सकती है पैराबोलाइड की। तो पैराबोलाइड जो है, वहां पे यहाँ पे एक जो यहाँ ये नीचे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये अम्बिलिक होता है, बाकी कोई नहीं। सो बिकॉज वी कैन चेक विद दिस क्राइटेरिया, हम देखेंगे अगर हम उसको पैरामीटराइज करें, इससे पहले पैराबोलाइड के बारे में बात की है, फिर वहां देखेंगे हम दिस रेशियोज इक्वल, सो देयरफॉर एट दैट पॉइंट, अब डिपेंड करता है आप इसको कैसे करोगे, यानी जैसे z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हम लेंगे, फिर हम इसको पैरामीटराइज कर सकते हैं एज u v u square plus v square, and then we would see that at the origin these ratios would be equal, and therefore this origin would be oblique. Anyways, so furthermore, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मैंने जब स्कूल में पढ़ा या कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा था डिफरेंशियल ज्योमेट्री, तो मुझे अजीब लगा कि जो ये डायरेक्शंस होती है, प्रिंसिपल डायरेक्शंस, वो हमेशा ऑर्थोगोनल होती है, वो आपस में परपेंडिकुलर होती है, बट वी कैन जस्ट डू इट कि जो ये डायरेक्शंस होती है दे आर ऑर्थोगोनल, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, जो कि अजीब है। अब देखो उसकी वजह यही कंडीशन है। सो 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 सिंस principal directions have to satisfy em minus fl lambda square plus en minus gl times lambda plus fn minus gm is equal to 0. So if du by dv
and del U by del V represent principal directions. We must have du by dv, sum of the roots, into del U by del V, which should be minus B by C, and वो होना चाहिए minus En minus GL divided by EM minus FL, and the product du by dv plus multiplied by del U by del V should be equal to Fn minus Gm divided by Em minus Fl. Now, then, if I'm looking for E duv, du dv plus F du del V plus dv del U, this quantity, अगर ये zero हो तो ये direction, this is the condition for orthogonality of two directions, is that this is zero. लेकिन अगर मैं इसमें इसको ऐसे लिखूं, E du by dv del U by del V, मैंने दोनों को इससे मल्टीप्लाई किया, F into, मतलब मैंने इससे डिवाइड किया दोनों से, मतलब थ्रूआउट. So मैं बताऊंगा अभी. Then I would get du by dv plus del U by del V plus G. मैं दिखाऊंगा ये जीरो है, क्योंकि अगर कोई चीज जीरो है फिर अगर उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो भी जीरो ही होगा, तो मैं दिखाऊंगा ये जीरो. सो अगर यहाँ मैं ये सब्स्टिट्यूट करूँ वैल्यू, दिस वुड गिव मी E into Fn minus Gn divided by Em minus Fl minus F into En minus Gl divided by Em minus Fl plus G. We just simplified, this becomes zero. मतलब सीधा सारा कैंसिल हो जाता है. So therefore the condition for ortho, अगर ये zero है तो ऐसे में लिखता हूँ, चलो del 1 by del, sorry, dv del v whole multiplied by this thing is equal to 0, is equal to this thing which is equal to this thing which is 0, which you can evaluate. So therefore the condition E du del U plus F into du del V plus dv del U plus G dv del U is equal to 0. Sorry, del V. Okay, so which implies that the directions du dv and del U del V are orthogonal. तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई भी सरफेस लो इंटरेस्टिंग, और अगर तुम कोई प्लेन लेते हो विच कंटेन्स द सरफेस नॉर्मल एट दैट पॉइंट, बस फिर उसको रोटेट करो, जो डिफरेंट सेक्शंस होंगे उनमें जो कर्व्स आएंगी, तो सबसे ज्यादा कर्वेचर वाली कर्व और सबसे कम कर्वेचर वाली कर्व आपस में ऑर्थोगोनल होंगे. दैट्स इंटरेस्टिंग. ओके, फर्दरमोर अगर हम इसको थोड़ा सा नोटेशन रिमार्क, so from चलो मैं फिर से लिखता हूँ, from h square kn square माइनस क्या था eg plus fl, वो हमारी en plus gl, सॉरी en plus gl minus twice fm times kn plus t square is equal to 0. इनके कुछ नाम है. The mean curvature, so mu is equal to the average of the two curvatures, जो कि बराबर होगा En plus gl minus twice fm divided by twice h square, is called the mean curvature.
the amplitude of the normal curvature हम लेते हैं इसका difference, amplitude उसका आधा, यानी somewhere amplitude of normal curvature denoted by A. A is equal to 1 by 2 K sub A minus K sub B. So thus मैं कह सकता हूँ इन दोनों का रिलेशन जो है एम्पलीट्यूड और मीन कर्वेचर का, कि A is equal to mu plus A and KB can be seen as mu minus A. दोनों को मिला के then the sum of curvatures. Now J, the first curvature इसको कहते हैं, although it's not that much used, not in our course at all. हमारे course में तो बिल्कुल भी use नहीं होगा. J is defined as, still you might, J has simply sum Ka plus Kb, and from that differential equation it would be of course En plus Gl minus twice Fm divided by h square, and the most important, the Gaussian curvature. K of a surface at any point is defined as K is equal to K sub A multiplied by K. Basically, इसी को हम मानते हैं local curvature at a point on the surface. This product of the principal curvatures at that point. So, obliques के मैंने बता ही दिया. A point is said to be an oblique. Point is said to be an oblique or a navel point if E by L is equal to F by M is equal to G by N at that point. And in that case, the principal curvatures at that point are indeterminate. Principal curvatures at that point at an oblique at that point are indeterminate. We cannot determine them, which means every normal section, there is a principal section. And the normal curvature has the same value in all directions. And the normal curvature has the same value in all directions. Okay, और कोई definition? Okay, हाँ मैं एक थोड़ा चीज भूल गया, एक छोटा सा रिजल्ट जो हमें इससे पहले करना चाहिए था. That's Munier's theorem. So Munier's theorem says, now firstly, now you जैसे कि हमने अभी तक किया, I have got a surface, then I have a point, वहाँ पे एक surface normal है और accordingly एक plane है which contains this surface normal and it cuts the surface in some curve, right? जिसको हम normal section कहते हैं. But a plane could also cut, and there could be some plane, मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, जो किसी और कर्व मतलब उसी पॉइंट पे कट करे सरफेस को, लेकिन वो उस एन को कंटेन नहीं करता है ना. देयर आर इन्फिनिटी मेनी सच पॉसिबिलिटीज. तो उसको हम नॉर्मल सेक्शन नहीं बोलते, उसको हम ओब्लिक सेक्शन बोलते हैं. यानी सिंपली ए सेक्शन, तो ऐसे ही that is not normal section is called an oblique section. इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इस oblique section के बारे में एक रिजल्ट है जो हमें करना है, and that's called Monier's theorem.
ऑफ कोर्स इट्स अ शॉर्ट थ्योरम जिसको हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। वो ये, इफ k sub n and k are curvatures of normal and oblique sections through a point, normal and oblique sections through a point, through the same tangent line at a certain point, through the same tangent line, and sections का जो tangent है वो of course same है उन curves का. Of course section is a curve, you know? And theta is the angle, यहाँ लिख सकते हैं respective to each other. And theta is the angle between these sections, between these curves, यानी मैंने क्या लिखा, between these sections, then kn is equal to k times cos of theta. Proof इसका बहुत ही simple है. Now k is the curvature of the oblique section. Therefore, its principal normal, जो इस curve की होगी, which is a plane curve, principal normal, let's call this small n, is not parallel to the surface normal at that point. क्योंकि अगर होगी तो वो normal section हो जाएगा. But it will be parallel to r double dash जो कि curve होगी divided by k, simply because we know that r double dash is equal to t dash. Serifan equation कहती है it is k times n, यानी n has the same direction as r double dash by k. Okay. Now if theta is the angle of inclination of the oblique section touching the curve at the point under consideration, then theta is also the angle between, because they're plane curves, angle between the principal normals of the two sections, and hence the angle between एक तो था अपना n by k, oblique section का जो principal normal है उसका ये है, and normal section का principal normal तो surface normal की direction में होता है. Therefore cos of theta is equal to, oh sorry मैं यहाँ गलत लिखा, it is actually r double dash by k. So that would be r double dash by k dot n, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, ये स्मॉल n है ये कैपिटल n है, but that would be 1 by k into r double dash dot n, which is nothing but kn by k. So kn is equal to k times cos of theta. तो एक छोटा सा थ्योरम है. Now as an home assignment एक simple सी exercise है, find the curvature
of the normal section of the helicoid is ज़्यादा मुश्किल नहीं. You just have to find the first and second order fundamental magnitudes. R is equal to R at U V is equal to U cos V, U sin V, and of course some constant times V. तो इसको तुम करोगे. So that was about this, the preliminary things that we did about these principal curvatures. So that gives us now an idea of the curvature of a surface, क्योंकि अभी तक तो हमने define ही नहीं किया था. Now, accordingly, we define now we have got certain very specific directions on the surface, the principal directions. So at each point there are possibly two principal directions, unless it's an oblique, जब सारे बराबर ही होते हैं. So at any surface there are two unique directions which are mutually orthogonal. और अगर वो जो directions एक differential equation बनेगी और उन directions से हमें जो मतलब वो ऑटोमेटिकली एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगी, तो उन कर्व्स को हम कहते हैं लाइंस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस. यानी वो एक ढांचा हमें देगा सरफेस का जिसपे हम उसको चढ़ा सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स वी कैन चूज देम टू बी पैरामीट्रिक कर्व्स. तो पैरामीट्रिक कर्व्स इस तरह से एक मुख्तलिफ पैरामीट्रिक कर्व्स बहुत सारे सेट ऑफ रीपैरामीटराइजेशन करके बन सकते हैं, लेकिन लाइंस ऑफ कर्वेचर्स आर स्पेशल, दैट इज गिवन बाय द सरफेस इटसेल्फ. तो वो भी सरफेस की इक्वेशन ही देती है, उसमें भी कोई शक नहीं. बट यहाँ पे वी नो वन थिंग, दीज डायरेक्शंस आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल. दूसरा ये कि दे आर द डायरेक्शंस, मतलब वहाँ पे जो प्रिंसिपल सेक्शंस का लीस्ट एंड हाईएस्ट जो कर्वेचर होगा वो उन्हीं दो डायरेक्शंस में होगा. तो जैसे अगर ये हो सिलेंडर, इसकी प्रिंसिपल डायरेक्शंस क्या होगी? तो ये होगी राइट, जहाँ जीरो कर्वेचर है. और दूसरा ये सर्कल होगा, हर पॉइंट पे तुम ऐसे डाल सकते हो. तो बेसिकली उनका अगर प्रोडक्ट देखें तो इस चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका कर्वेचर जीरो होगा, इसका कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली हर पॉइंट पे इसका गाउसियन कर्वेचर जीरो होगा. क्योंकि अगर एक भी प्रिंसिपल कर्वेचर मतलब जीरो हो तो गाउसियन कर्वेचर जीरो होगा. तो हम मानते हैं इट इज एज गुड एज अ फ्लैट सरफेस द सिलेंडर. सिमिलरली प्लेन तो खैर है ही, वहां तो दोनों ही जीरो है. then you could have many more examples जहाँ पे वो डिफरेंट होगा, जैसे स्यूडोस्फेयर, जैसे स्फीयर. चलो पहले स्फीयर लेते हैं. तो स्फीयर है, वहां पे इट वुड बी बेसिकली द कर्वेचर ऑफ टू, क्योंकि हर कोई डायरेक्शन प्रिंसिपल डायरेक्शन है, और ग्रेट सर्कल्स का जो कर्वेचर होगा उनका प्रोडक्ट होगा. और वो ग्रेट सर्कल्स का कर्वेचर सेम होगा, और अगर प्रोडक्ट लेंगे तो वो सेम चीज का प्रोडक्ट लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, है ना. बिकॉज वी नो दैट अगर सर्कल की रेडियस r है तो उसका कर्वेचर है 1/r. सर्कल का ही होता है, और इसी तरह से दूसरे सर्कल का भी 1/r होगा. तो इसका बेसिकली गाउसियन कर्वेचर होगा 1/r², where r is the radius, right, provided we have वो पैरामीटराइज हमने किया है आर्क लाइन से. यानी इन अदर वर्ड्स इसका कर्वेचर हर पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, हर पॉइंट पे. दैट्स इंटरेस्टिंग. और ऑफ कोर्स इसका जीरो होगा, प्लेन का, सिलेंडर का भी जीरो होगा. हाउ अबाउट देयर इज अ सरफेस जिसका नेगेटिव होगा? वो है अपना, क्या बोलते हैं, सेम नहीं होगा. यहाँ तो पॉजिटिव भी होगा और हर जगह सेम होगा, लेकिन दूसरा है जहाँ कांस्टेंट होगा. सो लेट मी, उसको हम बोलते हैं स्यूडोस्फीयर. मैंने ठीक से पिक्चर नहीं बनाई, लेकिन हम आगे उसको लेंगे जब हम सरफेसेस ऑफ रेवोल्यूशन, यहाँ ना फायदा नहीं, हम प्रूव करेंगे कि एक्चुअली उसका हर पॉइंट पे जो गाउसियन कर्वेचर है वो नेगेटिव है. So that would be okay. Before that, I want to
to a result about lines of curvature. जो कि मैंने अभी बताया था, what's a line of curvature? A line of curvature, let me define it. A line of curvature on any surface is a curve such that the tangent line to it at any point is a tangent line to the principal sections of the surface at that point. अब यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने जो बताया ना वो बड़े सिंपल से केस है, तो वहाँ हर जगह पे ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन सरफेस बड़ी ऊबड़ खाबड़ हो सकती है ना। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ सिचुएशन है। एक जगह पे जीरो कर्वेचर हो सकता है, किसी जगह पॉजिटिव, किसी जगह नेगेटिव। सो वहाँ पे ये ऑल पॉसिबिलिटीज हैं कि जो प्रिंसिपल डायरेक्शंस अजीबोगरीब डायरेक्शंस में हो सकती हैं, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमें तो इक्वेशंस के साथ डील करना है विच आर डिफाइंड लोकली, तो हम हर पॉइंट पे वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ओके, नाउ बचा है, मैं जरा शेयर स्टॉप करता हूँ। मैं चाहता हूँ, चलो संडे है, मैं देखना चाहता हूँ कितने जागे हुए हैं। जरा सभी अपना कैमरा ऑन करो।